Hey, let's do a book. हाय गाइस, दिस इज योर बॉय उमर राजपूत एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ इस तरह की आज हम सीखेंगे कि फ्रेंच में गाजर को यानी कि कैरेट और प्याज यानी कि ऑनियन को किस तरह से और किन किन तरीक़ों से कट किया जाता है। तो इसमें यह है सिंपली कि गाजर को फ्रेंच में कितने तरीक़ों से कट किया जाता है, ठीक है, मतलब उनके नाम क्या हैं, ठीक है। इनमें सबसे पहले आ जाएगा बातों ने, ठीक है। ये मतलब ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, सबसे पहले मतलब गाजर को 7 तरीक़ों से कट किया जाता है और प्याज को 3 तरीक़ों से। तो आज हम यही पढ़ेंगे, ठीक है, और सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर। Okay, vegetable cutting, mise en place. Okay, this is the overview of what we going to do. Okay. We are not. This one is turn. It's like a rugby ball. Rugby ball. There's a technique for it. Later on, if you guys get the knife, then I'll show you how to do it. Now you don't have the knife. We detach. So it's not one stroke. So if you use 2 stroke, then it will be jagged. It's not nice. It's not straight. Run down. So सबसे पहले सर अभी हमें बताएंगे कि बातों ने इसे किस तरह से हमने कट करना है, इसको इसका क्या तरीका कार है, इसका कितना साइज होना चाहिए, ठीक है। 3 hours it will be darkened. So you always peel. Peel, don't peel away from you. Peel, go inside. You guys take every single cutting over there. Okay, first buttonet is quarter inch times 2 inch times 2.5 inch. So up to you. तो अभी सर बता रहे हैं कि इसका जो साइज़ है ना वो 2 इंच तक होना चाहिए। मतलब ये मतलब जिसका जो डिस्प्ले है ना वो 2 इंच तक होना चाहिए। Around there. So this one you have to make sure it's straight. You cut down straight. So if you want to make it cube, not cube. Cube. What we call it? It's like a cylinder, but it's cube. Rectangle. Stand. So you can stand. Okay. And this is too tall. Okay. Then cut. It's like this. Okay. Plus buttonet to be example lah. So buttonet is the root one. सो अब इसके बाद बारी आ जाती है जूलियन की, ठीक है। तो उसकी शेप तकरीबन उसके जैसी है जैसे अभी हमने पहला बनाया बातों, लेकिन इसकी जो थिन आ जाएंगी थोड़ी सी। Julian. You three on the side. You just eat. Yeah, I will eat. You guys eat. So this is Julian. Okay. Julian. It will be very easy if find Julian, then we have Julian. So after Julian we can do dice, but this dice careful with your hand. How to cut? Just always hide your nails. Hide your nails inside, then use this as a direction, so you have a straight line. Okay, if it's like this, then you won't be straight. Okay, don't do it like this.
do it like that. It's very dangerous. Okay, once. Let me show you picture. I cut my finger. ये सर अभी दिखाने लगे हैं कि प्रैक्टिकल के दौरान उनकी फिंगर कट हुई थी. And this is me. Yeah, see, make a so yeah, take everything. So yeah, so it's something. So all of this have been removed. Something it's like yeah, I cut something. This is after Julian we have dice. Small dice, huh? Dice and I want to sleep. it's on. Trim it. It should be diamond. Should be diamond, but I don't want to waste. You can done it's like this, diamond. Okay, I don't want to waste. So slice. Always remember use your finger. Use your finger. Then use your nail. Slice. Example. Okay, this one. Not standardized. This kind of way. Before I forgot, next time your bag should be inside. I would suggest you to wear chef jacket from your house, but if you don't want to wear, then you're going to be hassle. ये अभी हमने राउंडल शेप में कट किया है, मतलब सर्कल शेप में. तो आज एक बहुत ही पते की बात मालूम हुई है कि अगर आप रोना नहीं चाहते प्याज काटते हुए तो आपने प्याज को ऊपर वाली साइड से नहीं कट करना, मतलब नीचे वाली साइड से कट कर देना जैसे अभी सर ने किया. ऊपर वाली साइड से उसे छोड़ देना, बाकी सारा प्याज कट कर लेना और लास्ट में वो मतलब ऊपर वाले हिस्से को कट कर देना. तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे. ऐसा इसलिए कि मतलब सर बता रहे थे कि इसमें ना लिक्विड होता है एक तरह का, मतलब प्याज के ना फ्रंट पे. तो अगर हम उसे ना कट करें तो लास्ट में कट करें तो फिर आंखों से आंसू नहीं आते. Okay, this one is small dice. This one I show you big dice. And then cut like this. Then you have flower. So cut away. Chop. Chopped. So, okay, this is chop. Carrot can chop, but block. The slot. You use 2 knives. You hold 2 knives. Hot water? Yes, 2 knives. Then stay with. This is chop until it looks like a chop. See. No. She doesn't do it. Exactly, that's it. The color, the like this. oh, you're shredding. Shredding lah. So sometimes you you don't call onions here. So so yeah, this is slicing. Careful way. This is soupy. If it's big size, French onion. it won't be soupy. It will be lumpy. Lumpy. What is lumpy? Lump means something. Kedel. Chip. Kedel. Mali cylinder. Mali baba. Okay. Sharp. Okay. This is floret. I make 2. Danu. I said Danu Malik. Each one of you will have 1 tray, or you can use plates. Oh, before I forgot, you guys every. So finally let's start. सर ने 15 मिनट दिए हैं सब बच्चों को इस परफॉर्म के लिए. सब ने मतलब अपना इंडिविजुअली परफॉर्म करना है, ठीक है. तो 15 मिनट के अंदर जो टीम मतलब सबसे पहले मतलब एक टीम में 3 मतलब जो है ना स्टूडेंट होंगे. मतलब यहाँ पे टोटल 12-13 बच्चे हैं, तो उसमें से हर टीम के पास 3 मतलब स्टूडेंट होंगे. अपना लेकिन इंडिविजुअली वर्क करेगी. तो अभी सब बच्चे अपने अपने जो है
यूटेंसिल्स इकट्ठे कर रहे हैं, मतलब अपने मतलब बर्तन वगैरह जिसे कहते हैं, बर्तन इकट्ठे कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि लास्ट में कौन विन करता है। तो बेसिकली नाम भी याद रहने चाहिए, मतलब लास्ट पे कि कौन से पीस का क्या नाम है, मतलब कौन सा मतलब पीस का क्या नाम है। सो देखें कौन जीतता है। मेरी बारी भी है, मैं भी अपना देखो सामान पकड़ूँ। तो ये हम अपनी पकड़ ली है हमने गाजर और प्याज। तो चलो स्टार्ट। गुड जॉब। तो ये अभी अपना काम कर रहे हैं। तो वीडियो बनाते बनाते ये प्लेट जो है ये मेरी है, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब कौन विन करता है। सब ने अपना अपना टास्क कंप्लीट तो कर लिया। हम देखें सबसे अच्छा किसका होता है, सबसे मतलब नाम किनको याद है मतलब अपने अपनी चीज़ों के। Rondel, yeah. Okay. Sundarana? Brunwa. Okay. Sundarana. This one is. Can you wow, this is nice. Okay. Face on. Sharp. Nice. This one should be sharp. This is not too sharp now. अब फाइनली आपके भाई की बारी आई है। तो ठीक है, सबसे पहले सर ने पिक्चर क्लिक की है मेरी, ठीक है। तो उसके बाद सर ने नाम पूछा, तो मैं इशारों से पीछे ना वाइट बोर्ड पे नेम लिखे हुए थे इन सब के, तो मुझे नेम नहीं था पढ़ना आ रहा, नंबर 5 पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैं इशारों से सर को समझाई, सर की जी कि वो वाला नंबर है, वो वाला नंबर है, ठीक है। तो सर ना एक दफ़ा तो सर हंसने लग पड़े। तो दूसरी बात में सर ने कहा कि वो वाला नहीं है, ये आपने मतलब गलत आपने नाम बताया, ठीक है। फिर आपने कोई और पूछा सर ने, फिर सर ने पूछा कि ये मतलब हाँ डायमंड की शक्ल में थी ये, मतलब ये कट पीस हो रहे थे, लेकिन डायमंड वाला सर ने सिर्फ बताया था, लेकिन ना इसमें ऑप्शन नहीं था 10 में से कोई। मैंने कहा सर जी डायमंड, सर कहते नहीं ये डायमंड वाला भी ये वाला नहीं है। तो सर ने फिर पूछा जूलियान, और वो जो जूलियान थी ना वो मैंने बनाई नहीं, वो ब्रिक ब्रिक ना थिन मतलब पतली पतली सी स्टिक्स थी, वो मैंने बनाई नहीं, वो साथ वाली ट्रे में पड़ी थी। सर ने फिर बताई वो वाली हैं, वैसी तुमने बनाई नहीं है, ये देखें। तो फिर मैं सर ने कहा शुक्रिया। Okay. Thank you very much, Janu. Alright, nice. Okay, Aji. सो फाइनली 3 घंटे के बाद आज हमारी क्लास अभी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह व्लॉग भी हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। और अपने भाई को याद रखो, दुआ में, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।